Hello and good evening. Welcome to N6 TV Canada. You're watching Match Point with Hamza Elahi, and with me are sports analyst Dr. Adnan Khan and sportscaster Gurpreet Purba joining me today. Let's move towards our headlines for today. The biggest headline for today would be Australia beating Netherlands, the biggest defeat ever in World Cup by 309 runs. Australia made 399 and thrashed Netherlands like anything. Glenn Maxwell breaking the world record for the fastest World Cup century as well. And the poor in Netherlands went out for 90 runs only. That's the headline from here today. Let's move towards our post match analysis. जी डॉक्टर नान, आपने इस मैच को कैसा देखा? मतलब हो गए थे कि आप प्रोग्राम का फॉर्मेट भूल गए क्योंकि अभी हेडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं। तो बाकी हेडलाइंस देनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं कि हार्दिक पांड्या भारत के स्टार ऑलराउंडर जिनका ताल्लुक लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है और जिन्होंने ग्रैंड फिनाले खेला था चेन्नई सुपर expected to be fit in time for India's clash versus South Africa. लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्लाइट लिगामेंट डैमेज है, लेकिन जब स्लाइट लिगामेंट डैमेज है तो एज अ डॉक्टर इट मीन्स आई मस्ट से दैट ही इज आउट फॉर अराउंड 2.5 weeks if there is a slight ligament. If you go per medical reports, लेकिन ये अब आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा जी बड़ी हेडलाइन आज ये है कि हमजा ने आपको पहली हेडलाइन दी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी शिकस्त की। एक दूसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि 115 रन 10 ओवर्स के अंदर पास टुलेडा ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई। उन्होंने जैम्पा का 113 रन का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और अगली जो हेडलाइन है वो एडम जैम्पा के मुतालिक है। ये कैसे हो सकता है कि टीम ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो और हेडलाइंस हमारे पास ना हो। एक बड़ी हेडलाइन है कि इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर की दौड़ में एडम जैम्पा ने मिचेल सैंटनर और बाकी साथियों को पीछे छोड़ दिया है। एडम जैम्पा अब 13 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं और लीड कर रहे हैं। जी हमजा। और जी आज का मैच जिस तरह के एक ही मैच था आज ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान में और जो कि एक दफ़ा तो वन साइड हो गया। डेविड वार्नर ने आज अपनी छठी वर्ल्ड कप सेंचुरी भी स्कोर की और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार बल्लेबाजी से आई मीन पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद आफरीदी या उसके पहले वालों का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो कुछ बॉलिंग स्टॉप हो गई, लेकिन he made 100 at 40 balls and keep on going after that. How do you see that inning, Dr. Nand? जी आपने जो तवज्जो दिलाई मेरी और गुरप्रीत जी की डेविड वार्नर की तरफ, तो मेरी नजरें कहीं और है। वो है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। डेविड वार्नर जो है वो मेरी तवज्जो का मरकज नहीं है। बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बता दूं दोबारा जिन लोगों ने अभी साइन इन किया है यूट्यूब और फेसबुक पे N6 टीवी के ऊपर या टीवी के ऊपर हमारी दृश्यात देख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो विक्ट्री है, हमजा ने आपको बताया था, दोबारा एंडोर्स कर दूं, 309 रन के साथ जो ये फतह थी। दिस इज द बिगेस्ट एवर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री और सेकंड बिगेस्ट इन द ओडीआईज। डेविड वार्नर की बात हमजा ने की तो कई चीजें ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई और सामने आई। डेविड वार्नर गेट्स मोस्ट हंड्रेड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, अब 6 के साथ है, लेकिन ओवरऑल वो सेकंड नंबर पर है। जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने स्मैश कर दी फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड कप
40th सेंचुरी थी और उन्होंने अभी चंद दिन पहले ही एडम मैकरम का रिकॉर्ड जो था बना हुआ था 49 बॉल्स का, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो उन्होंने अभी हाल ही में लास्ट वीक तोड़ा था। बेस्ट लीडर जिनके बारे में हेडलाइन दी थी, ही कंसीड मोस्ट रन्स इन एन ओडीआई 115, ये एक नया रिकॉर्ड है जो उन्होंने बेटर किया है एडम जैम्पा का। और ऑस्ट्रेलिया जो बिगेस्ट वर्ल्ड कप विन है, ये वर्ल्ड कप की तारीख से सबसे बड़ी है, लेकिन सेकंड बिगेस्ट इन ओडीआई है 309। तो शायद हमारे नाजरीन सुनना चाहते होंगे कि पहली बिगेस्ट जो रन्स की विक्ट्री है वो किसके पास है, तो जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि ये है मैच पॉइंट एंड यू कैंट अवॉइड दिस स्टैट। जो सबसे बड़ी फतह है वो भारत की फतह है, इंडियाज विन विद 317 रन्स वर्सेस श्रीलंका एट त्रिमापुरम स्टेडियम में जनवरी 2023 में जो ये फतह हुई थी, वो अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फतह है। 317 रन से ज्यादा बारी किसी और बैट्समैन या टीम ने इंडिविजुअली या मुश्तरका तौर पे नहीं खेली। और अगर फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरीज की बात करूं तो आपको बताया था कि मैकरम का 49 बॉल्स का रिकॉर्ड टूटा है और 40th में मुझे नजर आ रही है मैक्सवेल, और उसके नीचे मुझे 50 बॉल्स पे नजर आ रहे हैं केविन ओब्रायन, जो एक बड़ी अपसेट शिकस्त हुई थी भारत के अंदर 2011 के वर्ल्ड कप में। आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, तो उस मैच में ये रिकॉर्ड बना था। और देखें कि 2011 से अगर ऑनवर्ड जाते हैं तो कमोबेश कुछ 13-14 साल लगे कि जब फास्टेस्ट सेंचुरी बनी और एक ही वर्ल्ड कप में 2 रिकॉर्ड स्मैश हुए। दिस इज ऑल अबाउट क्रिकेट। और इससे नीचे अगर नजर आए तो 51 बॉल से मुझे मैक्सवेल नजर आ रहे हैं 2015 में श्रीलंका के अगेंस्ट, और 52 बॉल्स पे मैसिव मैसिव एबी डिविलियर्स नजर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2015 में। और जो टॉप टू हैं, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि वो दोनों इसी वर्ल्ड कप में है, और हैरत अंगेज तौर पे दोनों एक ही स्टेडियम दिल्ली में है, अरुण जेटला स्टेडियम। तो लगता है कि दिल्ली की थोड़ी सी बाउंड्रीज भी ये गुरप्रीत जी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चना स्वामी के बाद, चना स्वामी से ऊपर अगर कोई स्टेडियम छोटा है अपनी स्क्वायर की बाउंड्रीज में, तो वो आई थिंक यही अरुण जेटला स्टेडियम है। ये दोनों रिकॉर्ड मार्करम ने भी इसी ग्राउंड के ऊपर बनाया था ये रिकॉर्ड, और जो बहुत बड़ी बारी खेली थी साउथ अफ्रीका ने, और ये बारी भी यहीं खेली गई है। तो यहीं पर मैं माइक ओवर करने से पहले आपको बता दूं कि शायद अगला क्वेश्चन ये हो कि वर्ल्ड कप का सेंचुरी का रिकॉर्ड तो 40th है, लेकिन फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज तो वो ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स के पास ये रिकॉर्ड है। 31 बॉल्स पे उन्होंने ये सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था कोरे एंडरसन का, जिन्होंने 36 बॉल पे की थी, और कोरे एंडरसन ने रिकॉर्ड तोड़ा था शाहिद खान अफरीदी का, जिन्होंने 37 बॉल्स पे सेंचुरी बनाई थी। तो हमजा ने जो बात स्टार्ट की थी, मुझे क्वेश्चन फेंका था कि डेविड वार्नर के बारे में क्या ख्याल है, तो दोबारा बता दूं आपको कि डेविड वार्नर की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन मेरे सारे ख्याल जो हैं वो कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, जो आपको मैंने बताया था। तो मेरा निशाना ग्लेन मैक्सवेल है। मैक्सवेल बिकेम द फर्स्ट बैटर इन द ओडीआई हिस्ट्री टू स्कोर अ सेंचुरी आफ्टर हैविंग फेस्ड फर्स्ट बॉल आफ्टर द 40th ओवर। वुड यू बिलीव, कुछ खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में ऐसे थे, मिसाल के तौर पे ग्लेन फिलिप्स, आपके क्लासन हो गए, ये खिलाड़ी वो हैं जो आप कह सकते हैं कि काउंटर अटैक करते हैं, या इनको मैं क्या नाम दूं कि ये अटैक स्पेशलिस्ट है। मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मैक्सवेल और मिलर, किलर मिलर जिनको कहा जाता है, मैक्सीमेनिया, ये पागलपने की इंतहा तक जाते हैं। और जब पागलपने की इंतहा तक जाते हैं तो इनको दैट्स व्हाई आई से देम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन्होंने सही उनको ग्लेन फिलिप्स और क्लासन को मैं कहूंगा टारगेट किलर्स, और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं पहले आपको बताता चलूं, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो हमजा भी बताएंगे मुझे, टीम इंडिया के साबिक मीडिया मैनेजर रजन नैयर जी हमें इस वक्त मुंबई से ज्वाइन कर चुके हैं। रजन जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो मैं आपको मैच पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। जी हमजा। अब इंडिया से अब रजन नैयर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि एक्स मीडिया मैनेजर रहे टीम इंडिया के साथ 2004 एंड 5 में।
पाकिस्तान का टूर भी किया, उसके अलावा उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और पूरी टीम पे अदर देन दैट द वर्ल्ड क्रिकेट पे एक बहुत गहरी नज़र है और हम पिछले काफ़ी दिनों से इनके एनालिसिस को एन्जॉय कर रहे हैं। रजन जी, हाउ डू यू सी टुडेज़ मैच एंड व्हाट डू यू थिंक इतना बड़ा टोटल और ग्लेन मैक्सवेल की इतनी बड़ी पारी कैसे देखते हैं आप? It is as Dr. Saab said, Maxwell mania is the appropriate word he has used. Maxwell is a big show player, and you can always depend. It is he goes for the broke. He doesn't believe in any other phenomena. His batting order has always shuffled, depending on the requirement of the Australian team. However, one has to give the devil its due. He was not among runs in the couple of games Australia had played. It was overdue. And we also learned that he was not too well before the game. He made it and made it count and made it big. This is how I would attribute. I had seen Klassen scoring a classic knock at Wankhede against England, against top class pace bowling. Yesterday, I saw Maxwell literally toying with the bowling and he made batting ridiculously easy. And some of his shots were unbelievable, amazing, and I would even go to the extent of calling it eccentric shots. Few in the world could have seen such phenomenal batting display by Maxwell, who also thrilled his family and extended family by playing a superhuman knock. Look at the way when he arrived at 40 overs. It was very much similar to what Jensen played against England after Klassen's departure against England at Wankhede. And both the knocks were all after that 40 over mark. The way they banged the bowling, they thrashed the bowlers, and they made it count and count it big. Look at the average of Australia's win, 309. Phenomenal. Yesterday, both myself and Doctor said that Australia has got a great chance, and they not only made it count but also ensured that their run rate will not dip in the final analysis. Yet, David Warner once again displayed his array of shots. Steve Smith is back in form. So is Laboshek. The Australians have ticked all the marks. And look at Adam Zampa, who was not among wickets in the first two matches. Ever since that, it has been not fiver, fourer. In every game, he has taken 4 wickets. Yesterday's bowling, one may count Netherlands, but yet you can never trust any team in this modern day cricket, particularly in this World Cup, who has come up trumps against all odds. And Adam Zampa has already taken 12 wickets in 3 games. What a phenomenal. So, according to me, Australia is now ripe, fully ready to go ahead in this tournament. जी, यहाँ पर मैं छोटी-सी बात कर दूँगा अगले 2 गेम्स में उनका 1 विकेट था। नेक्स्ट 3 मैचेस 12 विकेट्स, 4 विकेट्स ईच और वो दे हैव अराइव्ड एट स्टेज और अगर ये जिस तरह मैंने बात की ना मैक्सवेल की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तीनों टीमें जो इसका टॉप की हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों में चोक होने का पोटेंशियल है और इनमें से जो हैं उनमें तो चोक होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया अगर नॉकआउट में चला जाता है तो ऑस्ट्रेलिया इज अ नॉकआउट स्पेशलिस्ट टेक ऑन माय वर्ड्स जी हमजा Ji, can you hear me? Your take on the match, sir. And I have always been saying the same thing, and I echo with Mr. Rajan and Dr. Adnan that Australia has arrived. They arrived a little late, but we all know that 5 World Cups are not just one. You have to play
consistently well over the period of time to win a trophy like this. And Australia, although they have started slowly, there are so many reasons behind it why they have started slowly, and the biggest reason is that guy still has to play. And mark my words, the day Travis Head enters in this team will be a totally different team, because right now they are displaced from their original batting order. And once Labuschagne is gone out of this team, Steve Smith stays, Travis Head opens, and then number 3 Mitchell Marsh, this whole team changes, because then you can play Stoinis or Green, whoever you wish to. And the last part of the puzzle will get even more better for Australia once their fast bowler starts to deliver. Right now Zampa is delivering, but Mitchell March, uh, Mitchell Stark, as well as their captain, they have not arrived fully yet. And I hope as the games progresses, knockout games are approaching, Australia will play better than this, because they have the potential and their players perform ridiculously well during IPL as well. So I do see Australia going deeper in this tournament and their performance going further notches up. Back to you. जी, बिल्कुल जी, गुरप्रीत जी ने जिस तरह बात की, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा रजन जी को। देखिए रजन जी, जिस तरह ज़ैम्पा आपने भी कहा, गुरप्रीत जी भी ने कहा कि राइट इन द राइट टाइम पे वो पीक कर गया और 13 विकेट लेके, जहाँ पहले मैच इसको 1 विकेट थी इसकी, और उसके बाद अचानक यके बाद दीगरे इसने विकेटें ली और ये टॉप ऑफ द टेबल आ गया। यहीं पर देखें, स्पिन बॉलिंग खासा किसका है? ये गोरों का खासा नहीं है, ये इंडिया, रेस्ट इन पीस, बिशन सिंह बेदी के बारे में हमने बात की थी, बेदी जी, अब्दुल कादिर रेस्ट इन पीस, ये बड़े-बड़े नाम, मुरलीधरन, ये हमारा, ये सब कॉन्टिनेंट का खासा है। लेकिन क्या ऐसी वजूहात हैं कि पाकिस्तान अमंग दीज, चलो वराला गए तो फिर भी विकेट्स ले रहे हैं, शादाब 4 गेम्स, शादाब खान 2 विकेट्स, नवाज 4 गेम्स 2 विकेट्स, उसामा मीर 2 गेम्स 1 विकेट, और ये मैचेस इंडिया में हो रहे हैं, ये पर्थ की विकेट पे या मेलबर्न की विकेट पे नहीं हो रहे। एंड यू कैंट क्वालिफाई टू द फाइनल नॉकआउट्स विदाउट द स्पिन स्टैट्स। Very well, जी रजन जी। very well said, Dr. Ji. I was stating this fact in my last talk yesterday. How can Pakistan arrive in India without having a very good spin attack when यस you यस, had यू सेड। excellent, outstanding spinners in the past? And if you look back at the Pakistan strategy earlier, they always depended on spin and they had a combined balanced attack after their fast bowling observation, where they bowled exceedingly well in the top half, picking up at least 3 wickets in the starting slot. And the spinners exerted pressure. And look at not only Saklain Mushtaq Mohammad, leg spinner, Mushtaq Ahmed, all of them, and yet you have a battery of spinners. How could, and I am observing Shadab for last 1 year he has not been bowling well. What was the Pakistan think tank doing to develop another bowler? Look at Sri Lanka, Velaway. He has developed from under 19 category. Noor developed from an under 18 category. Why can't they express themselves when they know the World Cup is going to be held in Indian subcontinent, in India? Pakistan should have been better prepared. They were always talking about their pacemen. And what, when pacemen failed, the whole team failed. Their batting failed, the whole team failed. Their fielding atrocious, as I said, everything failed. Why can't we think beyond a point? And what the think tank, the coaching staff were doing, it is very painful to see that in the subcontinent, only Pakistan spinners are not doing well, while Australia, even for that matter, England, even for that matter, South Africa, who were basically their wickets are fast. But Keshav Maharaj, along with his counterpart, all of them were bowling well. At least they were, if not wickets, they were restricting. But the Pakistani spinners were thrashed all over the park. So that's my take on the, as far as that part is concerned. अच्छा, अब रजन जी और गुरप्रीत जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कि पाकिस्तान, बात हम कल करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, आज बात नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से खेलना है।
आम तौर पे तो ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान को वो तहस-नहस कर देंगे। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री सामने रखूं, हिस्ट्री डज मैटर। हिस्ट्री के अंदर देखा गया है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ये दो ही टीमें ऐसी हैं जो जब जब फंसती हैं पाकिस्तान के आगे फंसती हैं। कितने परसेंट चांस हैं कि पाकिस्तान इनको इस वर्ल्ड कप में भी फंसा ले, लाइक द 2011, लाइक द 2015, लाइक द 2019। इस वर्ल्ड कप में फंसने के कितने चांस हैं? और दूसरा ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट कि मेरा ख्याल है गुरप्रीत जी ने या आपने किसी ने जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अब सारे क्लिक कर दिए हैं, सारे टिक कर दिए हैं। वार्नर ने छठी वर्ल्ड कप सेंचुरी कर दी, स्मिथ ने पहली 50 कर दी, मैक्सवेल ने पहली 50 कर दी, लबूशाने ने पहली 50 कर दी और ऑस्ट्रेलिया के जो की बैटर हैं वो पीक करना शुरू हो गए हैं। मैक्सवेल क्यों नहीं चल रहे थे? मैक्सवेल की चलने की वजह क्या है कि जब ऊपर से वार्नर चले, स्मिथ चले, लबूशान चले, तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। जब उनको प्लेटफॉर्म मिला तो फिर उन्होंने हर बेहुदा शॉट जो उन्होंने खेलनी होती है 360 पीछे की जानिब राइट, वो जो शॉटें अजीबो गरीब आड़ी तिरछी खेलते हैं, हर चीज बल्ले पे आ रही थी। लेकिन जब ऊपर से डेविड वार्नर नहीं चलते, स्मिथ नहीं चलते, तो उनका बल्ला नहीं चलता। तो अब ऑस्ट्रेलिया की जो ये वाली पीक है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है भारत के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, और पाकिस्तान जैसा कि इनको यूजुअली फंसाता है वर्ल्ड कप में, कितने परसेंट चांस है फंस के आगे जाने के लिए? I'll take this one first. देखिए, जो अभी फंसाने की है, जो आपने हिस्ट्री बात करी, वी कैन नॉट डिनाई दैट पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू क्रंच गेम अच्छा परफॉर्म कर लेती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, बट गिवन द फैक्ट जो टीम पाकिस्तान की इस वक्त है और जो उनका कॉन्फिडेंस है एंड द स्पिनर्स, दे आर, जैसे राजन ने कहा है कि दे आर परफॉर्मिंग अट्रोशियसली, दे आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उनको कॉन्फिडेंस कौन देता? ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस देता है या तो आपका कोच देगा, या बॉलिंग कोच देगा, या फिर आपका कैप्टन देगा। कैप्टन आल्सो हिमसेल्फ लुकिंग लॉस्ट, उनकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, उनको समझ में नहीं लग रहा है जब बॉलिंग कर रहे हैं कि मैंने फील्ड प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है। उधर से जो आपके मिकी आर्थर हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो गाली निकाल रहे हैं खुद के प्लेयरों को। सो दे इट्स अ कंप्लीट केओस, देयर इज नो कोहेसिवनेस बिटवीन द कैप्टन, मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स। जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप मैच जीतने की तो बात सोच ही नहीं सकते। एंड दैट टू यू आर थिंकिंग अबाउट बीटिंग टू पावर हाउसेस who have better team than you, who have form on their side, who are performing in this World Cup. तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन दोनों को हरा सकता है। हैविंग सेड दैट, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, क्योंकि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पीटा, और ऑस्ट्रेलिया ने आज नेदरलैंड को सबसे बड़ी जो है हार दी है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम, बट गिवन द फैक्ट, गिवन द फॉर्म, और जैसी पाकिस्तान की फील्डिंग भी चल रही है, जैसा वो प्ले कर रहे हैं, आई डोंट सी अ चांस बीटिंग बोथ ऑफ देम। मुझे तो दो हार और नजर आ रही हैं। आई हैव टू से दैट कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, थिंक टैंक को, कि हार कितनी बड़ी मिलेगी या इस हार से बचना कैसे है, रादर देन थिंकिंग ऑन विनिंग। द ओनली थिंग कैन गो इन पाकिस्तान फेवर इज दे कैन प्ले के भाई अब हम तो डूबे हुए हैं, लेट्स don't think about loss and let's enjoy our game, let's enjoy our stay in this World Cup in India, and that is the only reason when they can openly play their cricket. अभी तक उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली नहीं है। जी रजन जी। जी, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है क्रिकेट में। एज गुरप्रीत सी सेड, cricket is a very uncertain game. One has to look forward to enjoy the game and be positive in thinking. Considering the Pakistan past performance, the less said the better. I would not be talking much about the past, lot has been said. However, New Zealand and South Africa are both informed teams. The only choice left with Pakistan at the moment, according to me, is they should go and express themselves and play fearless cricket irrespective of consequences. That is the only hope, because there is no other chance of Pakistan making it further. Fearless cricket, aggressive cricket, either you take it or leave it. It's really going full throttle and hope and pray for the best. This is as far as Pakistan position is concerned.
जी, बिल्कुल न्यूजीलैंड जी, एंड साउथ। हमज़ा का इशारा आ चुका है कि इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका पे भी हमने बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी 1-2 बातें हॉलैंड के बारे में। हॉलैंड का सफ़र बड़ा अच्छा रहा जी, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने एक अपसेट भी किया, लेकिन हॉलैंड की टीम बड़ी दब गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो दहशत है, वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दी। ऊपर से हॉलैंड जो है, एक तो हमारे दोस्त थे, उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने दोस्त के मैच से पहले राइट टाइम पे लबूशैन, डेविड वार्नर और ज़ैम्पा को फॉर्म में लेके आ गए। बड़ा शिकवा है जी बैस डलीडा को। मार बड़ी पड़ गई बेचारे को। बास लीडा बेचारा 100 कितने 113 रन खा गया, 119 रन खा गया। और ये और वैन बीक दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं। एंड ऑब्वियसली बड़ी टीमों को हरा के आए हैं। वेस्ट इंडीज को, जिम्बाब्वे को मार के आए हैं जब आईसीसी खेले हैं, नॉकआउट्स खेले हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन दोनों मिल के 192 रन खा गए। तो उसके बाद बचा कुछ नहीं था उनके अंदर कि वो कुछ कर पाते। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये देखी, आप लोगों की टेक भी लेना चाहूँगा इसमें कि जब इनके जो स्पिनर हैं, मुझे इनका नाम भूल रहा है, जो इंडियन ओरिजिन के स्पिनर हैं इनके, विजय दत्त दत्त दत्त। दत्त जब विक्रम दत्त। बॉलिंग कर रहे थे, तो देखें ये जानते हुए भी कि डेविड वार्नर थर्ड और फोर्थ आई मीन ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो बराबर उनको वहां पर बॉल दे रहे थे और उनको हिट करने का मौका दे रहे थे और उन्होंने उसी वक्त उनको चौके भी लगाए। मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड कि या तो एक्सपीरियंस की कमी थी या प्रेशर ऑफ द गेम था या डेविड माफ कीजिएगा, या डेविड वार्नर का प्रेशर था। एक तो उनका प्रेशर और ऊपर से जो 100 करते हैं ना डेविड वार्नर, तो वो इतनी खतरनाक जंप लेते हैं कि उससे वैसे ही बॉलर डर जाता है कि यार ये क्या करने लगा है। तो अब पता नहीं वो क्या प्रेशर था कि उन्होंने भी वहां बराबर ऑफ स्टंप पे बॉल बाहर रखते रहे, वो बराबर वहां पर उनकी बाउंड्रीज पे मजे से टहलते रहे, लेकिन इट वाज गुड। और एक और चीज मैंने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक देखी ऑस्ट्रेलियन टीम में, उससे मुझे याद आया कि जब डेविड वार्नर और स्मिथ की पार्टनरशिप हुई, तो डेविड वार्नर स्मिथ को मौका दे रहे थे। स्मिथ खेल रहे थे और इसी तरह जब दूसरी बड़ी पार्टनरशिप हुई, जब कमिंग्स और मैक्सवेल की पार्टनरशिप हुई, तो कमिंग्स ने मैक्सवेल को खिलाया और मैक उनको नजर आ रहा था कि जो करने जा रहे हैं असॉल्ट, मुझे लगा था कि एक टाइम पे नीदरलैंड इस गेम को संभाल लेगा और रिकवर कर जाएगा। लेकिन जब वो बास्ट लीडा को जब वो रन्स पड़े ना, जब वो 41 रन खा गए जब 2 ओवरों में, मेरा ख्याल है कोई 14-15 बॉलों पे, फिर वो दिल छोड़ गए उसके बाद। फिर उन्होंने उन्होंने बेसिकली मुझे लगा कि बास्ट लीडा ने जब देखा, उन्होंने हर मुमकिन स्पॉट पे बॉल फेंकी, लेकिन मैक्सी मैनिया ने जहां पर उन्होंने बॉल रखी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा बॉल को। ही वॉज गोइंग टू ईट द बॉल। उनका कोई पता नहीं उनके किस माइंडसेट से आज मैक्सी मैनिया आए थे कि उसके बाद मुझे लगता है कि वो कभी उनकी बॉलिंग रिकवर नहीं कर सकी। और ऑब्वियसली फिर जब इतना बड़ा टोटल हो, तो वो मैच उनके वो शोल्डर्स ड्रॉप हो चुके थे नीदरलैंड के, लेकिन स्टिल दे प्लेड मैग्निफिसेंटली इन दिस वर्ल्ड कप। आगे भी उनकी गेम्स हैं। तो सम वर्ड्स अबाउट द हॉलैंड टीम। हाँ जी, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं पहले एक चीज और ऐड कर दूं कि लेट्स नॉट लुक टू मच इनटू दिस विक्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यस, दे वन विद अ बिग मार्जिन, दे वन विद अ बैंग। 309 रन से वो जीते हैं। नो विक्ट्री, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी विक्ट्री, अ विक्ट्री इज अ विक्ट्री, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव लॉस्ट टू इंडिया, they have lost to South Africa. What they have won, they have beaten Netherlands. They have beaten Pakistan, which is not a very good team this World Cup, and they have beaten Sri Lanka, who have lost to everyone. तो अभी जो अच्छा टेस्ट है उनका नेक्स्ट गेम में पता चलेगा. We will see कि has Australia really arrived or is it just a splash in the pan? क्योंकि मुझे अभी भी इनकी जो बैटिंग लाइनअप है भले ही चल रही है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस स्ट्राइक रेट ऑफ लाबुशैन एंड स्टीव स्मिथ। आप नेदरलैंड को हरा लोगे, आप श्रीलंका को हरा लोगे, आप पाकिस्तान को हरा लोगे, बट विद दिस स्ट्राइक रेट ऑफ 71 balls and 68 runs, you are not going to beat India in India, you are not going to beat New Zealand, and you are not going to beat South Africa until and जी, unless। गुरप्रीत जी, स्ट्राइक रेट से मैं एक बात याद आई तो मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं कि जी आज मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट 240.9 था
और जी डेविड मिलर का कुछ दिन पहले जो उन्होंने इनिंग्स खेली वो 256.7 मैसिव स्ट्राइक रेट, और अगर उनको कंट्रोल ना किया रहता तो मुझे तो लगता है कि वो ये चले गए थे 600 पे जाना था उन्होंने। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें इनका तो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। Absolutely, but this is not a routine in one day cricket. It is a part and parcel of the T20 game. But if you think they will repeat the same thing against Mitchell Santner, against Kuldeep Yadav, against Tabrez Samsi, against Maharaj, it is not going to happen. Yes, they can still hit them for sixes, given the fact the skill set they have, but it is not going to be like 40 ball 100. It happens once in a blue moon sort of thing, although it has happened twice in this World Cup, 49 balls and 40, because the wickets are such. ICC has mentioned that the wicket should be batting wicket so that people come and enjoy because of the T20 era, right? So that is the only thing. Going back to Holland, they have played very well. Netherlands has been playing beyond what we could have expected. Nobody thought they will be playing that good. आज का जो स्कोर है 90, this is what we expect. हाँ 150 बना लेंगे, 200 बना लेंगे, but along with Afghanistan, they have played very good. You can say that they are not here to participate. They actually created havoc on जब उन्होंने एक बड़ी टीम को हरा दिया, and this is what the beauty of the World Cup is. जी राज. Well, well, as far as I am concerned, Gurpreet Ji has rightly mentioned Australia has come trump against some medium class teams compared to the big names. However, form is a class permanent. Form is necessary to make any team confident of their future action. Secondly, if Australia can bring in back head into the team, the whole equation changes. Head is an Absolutely. attacker, head is an attacker, so does the entire batting lineup changes. And considering Stoinis, he appears to be in better frame of mind than Green. That could be a very key factor. And as far as Stark is concerned, yesterday he was among the wickets. He is getting into the right groove, and you can never trust these Australians. They have their own strategy. And if you look back years ago in the World Cup, lot of history has been said. I will only add this much. When Brett Lee and Shane Warne pulled out of the West Indies World Cup, Australia still won with Gilchrist making great century in the final, and also their then bench strength bowlers ensured that their team won the final. So Australia, irrespective of what stature they are, what level they have played, how they have played, against which team they have played, they are a different breed of cricketers who have won 5 World Cups, and they know how to win a big tournament. And the last but not the least is the knockout punch. They are experts in delivering the knockout punch. Today in the modern cricket, with all the T20 adventure, the middle overs are going to play a key role in any match. And believe me, if Warner and Head can give them a good start against any opponent, even New Zealand was in the last World Cup in great form. But what happened? They lost to England in a very titanic close finish. Unfortunate in some incidents. But before that, McCallum was there, yet Australia hammered them brilliantly in the finals. So one has to understand that look, India is playing a powerful game today in Indian subcontinent with their spinners doing very well. But what in the knockout stage, will Santner also upset their apple cart, or either South Africa's 2 spinners or Australia's 1.5 spinners? That includes Maxwell. So one and Head comes into the attack with his left arm spin also. Don't just go by his batting. He also is a fairly decent bowler who can bowl a couple of overs. So I think all in all, we are heading to a stage where fourth team could be Australia along with India, South Africa and New Zealand. This is a fair take. The rest, uncertainty of the game will always be there. That was a great analysis for today's game, and everybody was chipped in, saying ups and downs and
what Australia should be doing. Let's move towards our pre-match, which is happening in few hours' time between England versus Sri Lanka at Bengaluru. Um, and let's see what are the predictions. What will our analysts say? Who is the have the higher ground here? Who will take this marca? Let's start with you, Gurpreet. I will take England. I think they have not delivered in this tournament. Given the team they had, I was very hopeful that the spin bowling attack they have should be good enough on these Indian pitches. I was always skeptical about their fast bowling attack because Wood and Topley is now injured. So fast bowling में मुझे कोई उनके दम नहीं लग रहा था. But I was very hopeful कि Rashid, Moeen Ali, they can pitch in and can be a good combination on these tracks. And उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है तो even if their bowlers give extra 30-40 runs, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी थी तो I was thinking कि अगर उनके bowlers ने extra run दे भी दिए तो they can still manage that and win some of these games. But they have played very poor cricket. They have not shown any learning. They are so much into their own hype itself कि हम जैसे खेलते हैं हमारी तरह कोई नहीं खेलता, हम तो बस लोगों को पीटने आए हैं. So that strategy has backfired. Sometimes you have to realize that अगर ये चीज नहीं वर्क कर रही है एक मैच हारने के बाद, दो मैच हारने के बाद, तो you have to learn a lesson. अगर आप लेसन नहीं लर्न करोगे तो टूर्नामेंट बाय द टाइम यू स्टार्ट चेंजिंग योर स्ट्रेटजी, टूर्नामेंट इज ऑलरेडी ओवर. तो अभी अगर वो नहीं जीतते, दे मस्ट विन एंड दे मस्ट विन विद बिग मार्जिन्स, व्हिच आई डोंट सी हैपनिंग गिवन हाउ ऑस्ट्रेलिया इज नाउ पीकिंग एट द टाइम. तो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, टाइम विल टेल. बट फॉर टुमारो दे हैव अ मच बेटर स्किल सेट व्हेन कंपेयर्ड विद दिस करंट श्रीलंकन टीम. सो आई एम टेकिंग इंग्लैंड टू विन टुमारो. Well, rightly said, aptly said. England on present day situation with their buzzball theory out of the window, I feel they are really on the way to not only come back to form but also in a position to win against Sri Lanka, who for some reason have been rather inconsistent both with their bat and with the ball. I have always said Sri Lanka has been a very potential, very highly rated, dangerous side. But in this World Cup, surprisingly, they have invested in youth. One will have to look forward for the next World Cup. As of now, Sri Lanka could still make an upset to some team, whichever is left over. But England should, on paper, as well as with the defeat in the back of their mind, will look for a vengeful attitude to win this game and not only to maintain their defending champion status and also to ensure that their players are in form and they don't lose their place in the side in the coming future. Ben Stokes has been sadly out of everything. His return to English cricket will be seriously questioned if England doesn't make it into the last four, irrespective of his status as the man who helped them to win the last World Cup. Cricket is a very no more far-sighted. It is a very short-sighted as far as the people are concerned, the fans are concerned, and even the administrators are concerned. They all want instant results. And with this thought in mind, they brought Ben Stokes back into the side. And with no results coming forward, they will have to eat a humble pie if England doesn't make it into the last four. Yet, England has a better chance. Sri Lanka could still make an upset. However, Sri Lanka will have to play out of their skin if not only to restrict England in through their good effort bowling, but also to ensure that England doesn't score big and they bat well with Mendes and company and their respective middle order batsmen. जी, बिल्कुल जी, बात को आगे बढ़ाऊँगा। रजन जी के बड़े अच्छे व्यूज़ गुरप्रीत जी ने बताया। थोड़ा-सा मैच के बारे में बताते चलें आपको कि इंग्लैंड विल टेक ऑन श्रीलंका नाउ इन द मैच नंबर 25 ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑन अक्टूबर 26। कहाँ खेलेंगे? बेंगलुरु में खेलेंगे। कौन-सा स्टेडियम होगा? चिन्नास्वामी स्टेडियम होगा, जहाँ पर अभी
रिसेंटली पाकिस्तान ने भी गेम खेला। इंग्लैंड विल हैव टू विन इट टू स्टे इन द हंट फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। जबकि रही बात श्रीलंका की, तो आफ्टर टेस्टिंग द विक्ट्री मे वांट टू कीप द मोमेंटम गोइंग, लेकिन इस मोमेंटम गोइंग के लिए उनको अगले 5-6 मैच जीतने होंगे अगर वो चाहते हैं कि इस कंटेंशन में जो वर्ल्ड कप की वो रहे। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस, करंट वर्ल्ड I guess we lost Dr. Adnan there for a little while, but that's fine. I hope he joins back. or with the English team, they have won only one of their 4 matches so far. तो उनको वापसी करना होगी। Their only victory came against Bangladesh while they were having suffering defeats at the hands of New Zealand, अफगानिस्तान। उसके बाद जो मोरल जो उनका डाउन हुआ है, वो जो 229 रन की जो हैवी डिफीट हुई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान ने जो इनको अपसेट किया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जोस बटलर की कि he led his side in the currently ninth in the 10th team table। थोड़े से अनलकी रहे। बटलर इज अ वंडरफुल प्लेयर, वंडरफुल कैप्टन, लेकिन उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया। जिस तरह बाबर अपनी टीम से काम नहीं ले सकते, उनका ट्रस्ट उनके फास्ट बॉलर्स है, उनका मान है, लेकिन फास्ट बॉलर्स उनको विकेटें लेके नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बाबर की पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे ही जोस बटलर की टीम भी इसी मुश्किलात का शिकार है। जोस बटलर और बाबर जो है बेसिकली वो एक ही तरह के उन्होंने बूट्स पहने हुए हैं। 2 पॉइंट्स फॉर द 4 मैचेस। श्रीलंका थोड़ा सा इस मैच में फेवरेट होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि दे ब्रोक देयर 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक विद अ विन ओवर द नीदरलैंड्स। उनके भी 2 पॉइंट्स हैं 4 मैचेस से। थोड़ा सा उनको विनिंग स्ट्रीक आ रही है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के ऊपर उनका पल्ला भारी होगा थोड़ा। पिच के बारे में बात कर लेते हैं, फिर रजन जी भी बताएंगे हमें कि चना स्वामी की जो पिच है बेंगलुरु की, इज अ बैलेंस्ड पिच। बैट्समैन को हेल्प देती है, सॉलिड बैटिंग होती है। 96 का क्वार्टर फाइनल हो या इस वर्ल्ड कप की गेम्स हो, हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं। पाकिस्तान जो वहां मैच हारा था, अपने प्रेशर और अपनी गलतियों से हारा था। पिच का कोई कसूर नहीं था, बैटिंग पिच है। जो पहले टॉस जीतेगा मेरे अंदाजे से वो पहले बैट करेगा। वैसे तो ये पिच कल कंडीशन बताएंगे कि कल कौन सी पिच पे खिलाना है, लेकिन जो पहले बैटिंग करेगा आई थिंक कैप्टन विल गो फॉर द बैट। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस वेन्यू के ऊपर लास्ट 20 मैचेस जो हुए हैं, एवरेज स्कोर 250 रन है, 250 रन। सरफेस इज स्पोर्टिंग विद इक्वल असिस्टेंट फॉर बोथ बैटर्स एंड बॉलर्स। बॉलर्स अगर कुलदीप चाहल जितने अच्छे होंगे या मिचेल सैटनर जैसे अच्छे होंगे, तो पिच भले कैसी भी हो, वो उसमें से आर्ट में से काम लेना जानते हैं। पिच कैसी भी हो, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद हो या उस जमाने का मद्रास हो, जब माइकल होल्डिंग आया करते थे कॉलिन क्राफ्ट के साथ और जूएल गॉर्डनर के साथ, तो उनको मालूम था कि इस डेड पिच से काम कैसे लेना है। आपके अपने अंदर एक टक्कर होनी चाहिए। ओवरऑल बताता चलूं आपको कि पेसर्स ने यहाँ पर 67% टोटल विकेट्स लिए हुए हैं इस वेन्यू पे। तो पेसर्स का पल्ला भारी होगा। और इंग्लैंड और श्रीलंका की जो अभी जहां मैच हो रहा है, यहाँ वेदर रिपोर्ट ये मुझे शो कर रही है कि टेम्परेचर विल बी 28.61 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी विल बी 28%, और जो विंड की स्पीड है वो 2.97 मिली सेकेंड्स है। तो इसका मतलब है कि वुड इस सरफेस से फायदा उठा सकती हैं अगर वो चाहें तो। डेविड मिलान, ही हैज अमेज्ड। इंग्लैंड को उन पे रिलाई करना होगा। डेविड मिलान हैज अमेज्ड 192 रन्स इन द 4 गेम्स एट द एवरेज ऑफ 48। स्ट्राइक रेट उनका मुझे दिख रहा है 106.07। कदरे का मैं अगर आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीकन से और नीदरलैंड्स की माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड की टीमों से, लेकिन फिर वही बात कि अगर डेविड वार्नर को देखें तो वो भी तकरीबन 109 के स्ट्राइक रेट पे है, तो उनके निस्बत इतना बुरा नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया विनिंग ट्रैक पे आ सकता है तो व्हाई नॉट इंग्लैंड। ही हैज स्मैश्ड डेविड मिलान 1 सेंचुरी एंड अचीव्ड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 140। दूसरी तरफ बताता चलूँ आपको, मेरे सामने जो श्रीलंका की ओपनिंग आ रही है, सदीरा समारा विक्रमा, ही हैज हिट 230 रन्स इन द 4 गेम्स। ही इज द टीम्स नंबर 1 रन स्कोरर इन दिस एडिशन ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। और उनका स्ट्राइक रेट भी कोई बहुत खातर ख्वाह नहीं है, इनसे मिला जुला ही है 103.13।
एवरेज इनकी खुल रही है मेरे सामने 76.66. He is also having a 1 century and a half century to his name in the ICC Cricket World Cup. और बात करूंगा थोड़ी सी मैं जाते-जाते अब बॉलर्स का ही बता दूंगा आपको कि आदिल राशिद has picked up 6 wickets in the 4 games और दिलशान मधुशंका 11 wickets in 4 matches and the average of 21.18. 4 for 49 his top bowling performance in this World Cup 2023. और जाते-जाते आपको आखिरी खबर के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आप जानना चाहेंगे मैच पॉइंट में कि इंग्लैंड और श्रीलंका जब मिले हैं तो कब-कब मिले हैं, तब-तब मिले हैं, क्या हुआ है? इंग्लैंड एंड श्रीलंका हैड कंप्लीटेड 78 ओकेजन्स पे इन्होंने compete किया है ओडीआईज के अंदर जिसमें इंग्लैंड हैव won 38 games जबकि श्रीलंका हैव win 36 instances. 8 match ended in a tie and the 3 matches yielded no result so far. Last 5 ODIs जो दोनों के बैन हुए हैं इंग्लैंड श्रीलंका 2 occasions पे the highest score in these 5 matches was 366 by Sri Lanka, while the lowest was 132 by England. दोनों टीमें 5 में से 2-2 मैच जीती थी, एक टाई हो गया था और अगर मैं इंग्लैंड और वर्सेस श्रीलंका ओडीआई रिकॉर्ड्स पे जाऊं तो इंग्लैंड का 333 फॉर 9 वर्सेस श्रीलंका एट टॉन्टन 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो कपिल देव की भारत की टीम का वर्ल्ड कप था वो इज द हाईएस्ट एवर टोटल अगेंस्ट श्रीलंका और श्रीलंका वहां पर नोवारेट टीम थी और उनकी एंट्री हुई थी उस वर्ल्ड कप में जबकि श्रीलंका का जो हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ दैट इज 366 फॉर 6 एट कोलंबो इन 2018 ये हाईएस्ट स्कोर था इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में तो इसी तरह जो लोएस्ट स्कोर है वो इंग्लैंड का 88 है वर्सेस श्रीलंका है डैम बोला इन 2003 और लोएस्ट स्कोर है ये और श्रीलंका का जो लोएस्ट स्कोर है वो मैनचेस्टर में 2003 67 में दोनों ने एक दूसरे को अपने घर में खूब लेताड़ा और आखिरी चीज इंग्लैंड की जो एवरेज स्कोर है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैचेस के अंदर वो 223 है जबकि श्रीलंका का जो एवरेज पार स्कोर है जो वो करती है इंग्लैंड के खिलाफ वो 217 है देखना ये है कि क्या वो चिन्नास्वामी के ऊपर इस बैटिंग पिच के ऊपर इन स्टैट्स को गलत करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे लास्ट में अपनी प्रिडिक्शन देना चाहूंगा कि इस मैच में मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मैं श्रीलंका को वाकई थोड़ा सा एज दूंगा इंग्लैंड के ऊपर ज्यादा नहीं 60-40 का थोड़ा एज दूंगा फाइनल टेक ऑफ रजन जी एंड गुरप्रीत जी खत्म कर देता हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ टीम दैट हैज जॉनी बेयरस्टो मैं समझा कि वो गुरप्रीत जी कहने लगे मैं खत्म करता हूँ कि मुझे सोने जाना है नहीं नहीं सोने भी जाना है बट द टीम दैट हैज जॉनी बेयरस्टो दैट हैज डेविड मलान दैट हैज जो रूट दैट हैज बेन स्टोक्स जॉश बटलर हैरी ब्रुक मोइन अली क्रिस वोक्स डेविड बिली मैंने पूरी के पूरे बना दिए अगर वो इस बार फिर इस श्रीलंका टीम से हार जाती है द गिवन श्रीलंकन टीम then I think they should take their bags and leave. That's it. There is no point playing after that. You have already lost 3 games. You are now going to, this is a complete embarrassment to English cricket, if I may say. अगर आप कल श्रीलंका के साथ भी इस टीम के साथ हार जाते हो, you have the complete ingredients. तो मुझे फिर ऐसा सोचने पे मजबूर करता है कि maybe Owen Morgan was the man who was leading the same pack and Josh Butler is not able to capably handle these so called superstars और इतने अच्छे प्लेयर आपके पास हो आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म ना करे एंड सेम अप्लाइज टू बाबर आजम समहाउ समवेयर इनकी कैप्टनसी पे दोनों की पे क्वेश्चन मार्क है विद द स्किल सेट दे हैव विद द प्लेयर्स दे हैव जी राजा I, I fully appreciate Gurpreet ji's take on English team. The originators of this game, with this team at their best, should not even think of losing this game to Sri Lanka in spite of Dr. Saab's prediction of 60-40. I still feel England should pack up and put their all the bench strength team to play if they lose today. They cannot afford to lose, and defending champions can't lose to teams which they never thought they could lose. And today, with the names and the glamour of the players who have done exceptionally well in IPL, though IPL I don't consider as a yardstick for this tournament of the World Cup standards because it's not a 4 over game. It's a 10 over
game as far as bowling is concerned. And England, with their bowling attack with two spinners, it was a massive surprise for me how Moeen Ali was dropped in Bombay against South Africa, knowing South Africa's slight weakness irrespective of their batting strength against spinners. Adil Rashid was left high and dry with the batting of South Africans. Moeen Ali benched. So Moeen Ali could be a good batting all-rounder, could be a more than decent bowling all-rounder who played in the final last time when England won in England against New Zealand. So that cannot be written off. Sri Lanka definitely with Samavira and others in top form regularly, yet they still have a lot to offer through their youngsters. England team definitely is more matured and has the capacity. Josh Butler definitely along with Bairstow and company, and Stokes has to prove a point at this stage of his career whether his recall is justified or not, irrespective of his status as one of the well crafted all rounder of all times for England. Everybody has a chance and everybody has a time to come and go. So, England has got many people who, after this World Cup, will quit. That's what my guess is, and we look forward for an excellent, outstanding match with England. If they fancy any chances for the future, this is make or break game for them. Thank you. Excellent analysis, gentlemen. Thank you very much for pitching in and putting in your analysis and your predictions. Dr. Saab said 60-40 to Sri Lanka. Gurpreet is haven't said the thing, but he's supporting England and wants England to win. Rajanji also thinks that England on the cards on the given day should win this match, given all the glamour and all the big names they have. Me, I have lived in England for a little while, for about 7 to 8 years. My teenage years were in England, so I have a bit of fascination with English cricket. I am going to fully support the idea. My prediction is 55-40, 55 to win for England, 45 for Sri Lanka. Given the circumstances, Sri Lanka has a young team, and let's see what happens in few hours tomorrow. And we will see you after tomorrow's match. Sure. And second is Butler. I will add one more name, that is Bangladesh captain Shakibul Hassan, who also is on the receiving end and could be his last World Cup, considering Bangladesh is at the bottom of the table. A Yes. lot of questions need to be asked for him also, who was the best all-rounder in 2019. It's time for Shakib to say goodbye before he is exited by the Bangladesh management. Yeah, he is right. Yeah, yesterday we told the comparison of the 2019 World Cup. His six scores of 450s and the 100, and right now he is not able to make a single 50, and three times he is not able to touch the double figures. Yes, you are absolutely right. It's amazing. He's on the low. And the news also came in that he is flying back for 3 days or something for personal reasons. That was the news today. Actually, Gurpreet they are broken off after the Tamim went off and the team in the disarray. After the Tamims left it in between the team after meeting Hasina was the PM of the Bangladesh, and then everything was in the confusion there. And then the Mahmoodullah playing at the number seven, making the centuries, the only century maker, two centuries in the 2019 World Cup. How can you drop the player at the number six, number seven instead of playing at the number three and number four? This is something insane theory. I could not get the theory of Bangladesh. And the bowlers getting hammered like that. Mushafkur body language. He's a very good batsman, wicketkeeper batsman, but things are very strange. They are not in the good shape. They are not in the harmony. This is not the Bangladesh team. I will just add, because I know we have to wrap up. If you look around globally, there are only handful of teams that you can say that there is a complete bench strength. And on top, I would say India, because India at a given time you can have two teams for each player. There is a backup available. Other Yes, there teams, is no question about that. If Kohli especially goes out, they have Pakistan, a backup. Pandya goes Bangladesh, out, they have a backup. yeah, Pakistan, Bangladesh, they have to go back.
to the drawing board. They have to look into their system. Why you are not producing players? Because when we started the program, we were saying Pakistan don't have spinners. Why they didn't look into it? Why they didn't bring? But there is nobody. Who you gonna tell me five names that are not playing over here, but they could be potentially into the team that could represent Pakistan at this world stage? And if you ask me, I will tell you 10 names that should be there on this Indian team. They just missed it, like Yeah. Yashasvi Jaiswal, like Sanju Samson, Gaikwad, you name anyone, I can tell you another team parallel to this that is equally capable, if not better, because they are youngsters. Yuzvendra Chahal. Yeah. So Yeah, somehow, absolutely right. There is no question of India's bench strength. They have already played in the Asian Games recently, got a gold medal there. They sent Lakshman as manager while he had Dravid, two of the India's most veteran cricketers. They were guiding the team. They have a National Cricket Academy at Bangalore where there is a consistent training and also people getting injured. They go back to the drawing board, get themselves updated. And I was amazed to listen to Wasim Akram day before yesterday when he said the quantum of food consumed by the Pakistani players and the health they maintain. I mean, it's absolutely ridiculous. How can somebody say that they're eating 8 kgs of meat and then that is reflected in their beautiful fielding? Is there nobody watching it? What is it happening? Is there the strength? And if they are having consuming so much of good meat, then that should be explosive on the ground. I mean, it's a real joke and a fantasy to remember. One of few things, bold statement made by some of the Pakistani veterans. They must be definitely peeved, angry, annoyed, disgusted, and very, very sad to see this display from their people. It's no just criticism, it's a sad reflection of the players of the past and the public and the fans. That's it. It was absolutely pleasure talking to all of you. It was an immense pleasure talking to all of you. And as you said, what Wasim Akram said, I was watching, and ICC have put up a video when Shaheen Shah Afridi came in to ball the last ball, and it was hooked on the left hand side, and Afghanistan won the match. The Combox camera was focused on Waqar Yunus, and Waqar Yunus left his mic down and could not spoke a single word for 45 seconds, and he was in shock that he was watching the team which maybe he built as a coach, or maybe he played at one time, which was at top of the game, and he couldn't speak a word. The that documentary for 40 seconds, that reel which is going all over the social media, tells you about it, that how much disappointed is Pakistani fans and the previous players who are saying all this, whatever you're seeing on social media and other platforms, are making the hue and cry about how hopeful that it will get better by Friday. We'll see you everybody tomorrow after the England and Sri Lanka games. Keep our predictions in mind. We'll catch you and see who gets it right. I hope it was England. My fingers are crossed, and we will see you tomorrow. Thank you very much, and thank you, gentlemen, for joining us. Thank you very much.